Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Please subscribe. Dear viewers, today we are going to read about American literature's second period, that is called American Romantic period or American Renaissance. Dear viewers, all of you know that the French Revolution of 1789 marked a watershed for the future of Europe, a fact keenly discerned by writers on both sides of the Atlantic, and it was the first full-fledged literary movement that developed in the US. It was a time of rapid expansion and growth in the United States that fueled intuition, imagination, and individualism in literature. It started in 1820. Intuition, आप जानते हैं ये क्या है? The ability to acquire knowledge without recourse to conscious reasoning, or a form of knowledge that appears in consciousness without obvious deliberation. इसे हम क्या कहते हैं? इंटुइशन. और उसके बाद इमेजिनेशन, आप जानते हैं ये क्या है? ये एबिलिटी है to produce and simulate novel objects, sensations and ideas in the mind without any immediate input of the senses. We can say to imagine is to represent without aiming at things as they actually, presently and subjectively are. We can use our imagination to represent possibilities other than the actual, to represent times other than the present, and to represent perspectives other than one's own. और इंडिविजुअलिज्म क्या है ये भी आप जानते हैं कि इट्स अ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी दैट emphasizes the moral worth of the individual. Or you know that in USA, individualism became part of the American ideology by the 19th century, incorporating the influence of New England Puritanism, Jeffersonianism, and the philosophy of natural rights. Though American individualism was universalist and idealist, but it acquired a harsh edge as it became infused with elements of social Darwinism, that is, the survival of the fittest. इन तीनों टर्म्स को जो है बयान करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि ये रोमांटिसिज्म के एलिमेंट्स हैं इन जनरल, और ज़ाहिर है अमेरिकन रोमांटिसिज्म में भी यही रोमांटिक एलिमेंट्स क्या हैं वो शामिल थे. Within the romantic stories, novels and poems, there are 5 characteristics which can be used to identify American romantic literature. कि ये characteristics हैं उसकी अमेरिकन रोमांटिक लिटरेचर की. इमेजिनेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिविजुअलिटी के बारे में भी. तीसरा है नेचर एज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि जो रोमांटिक्स थे ये नेचर को आइडियलाइज करते थे, नेचर को ग्लोरीफाई करते थे, और नेचर को समझते थे कि इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड या इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी. लुकिंग टू द पास्ट फॉर विजडम, यहाँ पास्ट को भी ग्लोरीफाई किया जाता था, और पास्ट और प्रेजेंट के कंपैरिजन में पास्ट को जो है वो बेहतर समझा जाता था. इसलिए जितने भी रोमांटिक राइटिंग्स हैं, चाहे वो ब्रिटिश रोमांटिक्स ने लिखी या अमेरिकन रोमांटिक्स में, उनमें आपको मेडिवल टाइम्स की झलक जो है वो बार बार नज़र आती है. सीइंग द कॉमन मैन एज अ हीरो, ये तो आपको पता है रेनेसां का आइडियल ही था कि आम आदमी को जो है मौजू बनाया जाने लगा. कि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो कोर्टली रोमांसेस थे या हेरोइक डीड्स थे, मतलब ऑफ अ ग्रैंड नेचर, उनकी जगह पर आम बंदों को भी पेश किया जाने लगा. और वैसे भी आपको पता है कि
ब्रिटिश रोमांटिक्स वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने जो थेरी प्रोपाउंड की थी, तो उन्होंने कहा था कि पोइट्री भी जो है वो कॉमन मैन के लिए होनी चाहिए, कॉमन ईडियम यूज़ होना चाहिए, और जो है जिन लोगों को रिप्रेजेंट किया जाए उनका ताल्लुक भी आम तबकात से हो। तो इसलिए अमेरिकन रोमांटिक पीरियड की भी यही खसूसियात थी। अब हम आगे चलते हैं। It stands for a literary renaissance. It was named after a medieval romance, a tale or ballad of chivalric adventure and individual heroism. Romanticism was preceded by several related developments from the mid-18th century. This can be termed as pre-Romanticism, or among such trends, there was a new appreciation of the medieval romance. And from these medieval romances, the Romantic movement derives its name. The romance यही होती है, a tale or ballad of chivalric adventure and individual heroism. Or in it, there is exotic and mysterious, that is in clear contrast to the elegant formality and artificiality of prevailing classical forms of literature, such as the French neoclassical tragedy or the English heroic couplet in poetry. तो ये जो न्यू इंटरेस्ट थी in relatively unsophisticated but overtly emotional literary expression of the past was to be a dominant note in Romanticism. इसका मतलब है कि रोमांटिसिज्म का आगाज़ जो है नहीं, रोमांसेस में जो एक नई इंटरेस्ट जनरेट हुई थी उससे शुरू हुआ। Among the first American romantic authors were Ralph Waldo Emerson, बल्कि इसे इस मूवमेंट का बानी भी कहा जाता, and Henry David Thoreau and Nathaniel Hawthorne. Romantic writers saw themselves as revolting against the age of reason and its values. Age of reason को हम Enlightenment में कहते हैं, और अब हम आते हैं कि Enlightenment क्या है और इसके खिलाफ इन्होंने क्यों रिवॉल्ट किया। तो ये एक यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी in which ideas concerning God, reason, nature and humanity were synthesized into a worldview that gained wide assent in the West and that instigated revolutionary developments in art, philosophy and politics. जिसका जो central point था, या जो central thought थी, it was the use and celebration of reason. और उनके नज़दीक this was the power, that the reason was the power which humans, या through which humans understand the universe and improve their own condition. They thought that the goals of rational humanity were considered to be knowledge, freedom and happiness. तो रोमांटिसिज्म जो है इन आइडियल्स के खिलाफ जो है रेवोल्यूशन का नाम था या रिवॉल्ट का नाम था, और इसे जो है एज ऑफ रीज़न के साथ साथ इसे कहा जाता है कि ये जो है रैशनलिज्म भी कहा जाता है, कि ये दोनों टर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो रैशनलिज्म में यही है कि आप जो है रीज़न को सुप्रीम समझते हैं। Washington Irving is regarded as the father of American literature. इसके बारे में पिछले लेक्चर में हम तफसील से पढ़ चुके हैं। रेप वैन विंकल जो इसकी मशहूर जो है शॉर्ट स्टोरीज की बुक थी। Romantics believed that they could achieve high level of insight and information about the world around them just by going to nature. वही मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ, ये finding God in nature। तो रोमांटिसिज्म को एक मरतबा फिर मैं दोहरा देता हूँ आपके सामने कि यह है क्या, कि जो कैरेक्टरिस्टिक एटीट्यूड्स हैं रोमांटिसिज्म्स के, उनमें शामिल है अ डीपन्ड अप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटीज ऑफ नेचर, a general exaltation of emotion over reason and of the sense over intellect, a turning in upon the self and a heightened examination of human personality and its mood and mental potentialities. Or we can say, in other words, a preoccupation with the genius
the hero and the exceptional figure in general, and a focus on his passions and inner struggles, a new view of the artist is more important than strict adherence to formal rules and traditional procedures, कि उन्होंने वो जो न्यू क्लासिकल आइडियल्स थे लिटरेचर के उनको तर्क कर दिया. An emphasis upon imagination as a gateway to transcendent experience and spiritual truth, an obsessive interest in folk culture, national and ethnic cultural origins and the medieval era, and a predilection for the exotic, the remote, the mysterious, the weird, the occult, the monstrous, the diseased, and even the satanic. ये romanticism की जो है समझ लें एक ब्रीफ और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है कि ये ट्रेंड्स हैं जो रोमांटिसिज्म में फॉलो किए जाते हैं. The period in these writers were known as the American Renaissance, a term coined by F.O. Matheson या Matheson in his book of same name in 1941, कि ये मैथाइसन ने लिखी थी जो एक अमेरिकन क्रिटिक और राइटर थे. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अदर रोमांटिक राइटर्स हैं एडगर एलन पो, रॉल्फ वॉल्डो एमरसन, डेविड थ्रू, नाथानियल हॉथॉर्न, हरमन मेलविल, वॉल्ट विटमैन. इनके बारे में हम तफसील से अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे कि मैं डिटेल से इनकी जो किताबें हैं और जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे. अब these American Renaissance writers could generally divided in two categories. कुछ को हम कहते हैं dark romantics और कुछ को हम कहते हैं transcendentalist. First of all, I come to transcendentalist. The transcendentalism movement. It was a social movement and idealistic philosophy in which knowledge about ourselves and the world around us transcends what we can see, hear, taste, touch or feel. Transcendentalists believe that the divine spirit resides within all of us. They embrace intuition rather than rationality and believe in the inherent goodness of both people and nature. कि ये इनके ideals थे. Equality for all humanity and nature manifested into sporting, feminism, communal and sustainable living and abolitionism. Many American authors, particularly in Massachusetts, embraced the movement and formed what they call the Transcendental Club in the 1930s, and some organized utopian communes in the 1840s. Sorry, in 1930s, in 1830s they established the Transcendental Club and organized utopian communes in 1840s. तो इनमें मशहूर है रॉल्फ वॉल्डो एमरसन, डेविड थ्रू जिसने वार्डन नामी बुक लिखी, इसने नेचर नामी लिखी. इसके अलावा ब्राइंट था, रिप्ले, मार्गरेट फुलर, ये खातून थी, लॉन्गफेलो, लुइसा मे अल्कॉट, वॉल्ट विटमैन, और अपने अर्ली करियर में नाथानियल हॉथॉर्न को भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहा जाता था. अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ कि डार्क रोमांटिक्स कौन थे. तो ये डार्क रोमांटिसिज्म क्या है? इट्स अ जॉनरा of Romanticism, and it is thought to have emerged from the Transcendental movement in 19th century America. कि Transcendentals felt perfection in their own divinity as innate qualities of mankind. तो ये क्या कहते थे? Dark Romantics believed human gravitate to evil and self-destruction. कि हमारी nature essentially good नहीं है बल्कि essentially evil है. Dark Romantics focused on human fallibility, self-destruction, judgment, punishment, as well as the psychological effects of guilt and sin. तो Dark Romantics में आते हैं एडगर एलन पो,
Herman Melville, Nathaniel Hawthorne, Emily Dickinson और जो ये राइटर्स थे, इन्होंने इन्हीं थीम्स के मतलब लिखा। तो अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैं फिर जो है एक दफ़ा रोमांटिसिज्म को डिफ़ाइन कर देता हूँ, क्योंकि रोमांटिसिज्म जो है वो एक ब्रॉड जो है मूवमेंट है, जो सिर्फ लिटरेचर तक नहीं बल्कि ये पेंटिंग, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, क्रिटिसिज्म और हिस्टोरियोग्राफी में भी शामिल है। और ये मूवमेंट जो है फ्रांस में भी थी, जर्मनी में भी थी, इंग्लैंड में भी थी, अमेरिका में भी थी। तो इसलिए लेट्स डिफाइन इट वंस अगेन। Romanticism means an attitude or intellectual orientation that characterized many works of literature, painting, music, architecture, criticism, and historiography in Western civilization over a period from the late 18th to the mid-19th century. It can be seen as a rejection of the precepts of order, calm, balance, harmony, idealization, and rationality. Okay, it was a reaction, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, against enlightenment, और जो enlightenment थी, तो like the European romantics, these American writers reacted against what they perceived to be the mechanistic and utilitarian tenor of enlightenment at the age of reason. They rebelled against industrial, urbanized world governed by the ethics and ideals of bourgeois commercialism. So these romantics thought to redeem the ideas of spirit, nature, and the richness of the human self within a specifically American context. So I think that's enough for today. See you tomorrow with the next lecture about the transcendentalist and dark romantic Nathaniel Hawthorne. Till then, Allah Hafiz, stay safe, stay blessed, and keep on subscribing my channel.